भारतीय सभ्यता का एक अनमोल खजाना है आयुर्वेदा। माना जाता है कि आयुर्वेदा की शुरुआत ब्रह्मा जी से हुई। ब्रह्म जी ने आयुर्वेदा का ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति से ये विद्या अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य तक पहुंची। अश्विनी कुमारों ने इस ज्ञान को इंद्रदेव को दिया। आज बहुत से अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक इस ज्ञान की मदद से पूरी दुनिया में लाखों लोगों को आरोग्य लाभ दे रहे हैं। उन्हीं में से एक उत्कृष्ट चिकित्सक हैं डॉक्टर नवदीप शर्मा। डॉक्टर नवदीप शर्मा स्वर्ण मंदिर शहर से जुड़ी एक आध्यात्मिक चिकित्सक हैं। आयुर्वेद के अंदर अपनी ग्रेजुएशन श्री लक्ष्मी नारायण आयुर्वेदिक कॉलेज से की, जो हमारे देश के पुराने और प्रसिद्ध संस्थानों में से एक है। Namaskar. A very warm welcome to all of you in this live interactive session of ours, where we generally try to discuss quality Ayurveda with you. And while we discuss Ayurveda with you, we also take your questions in regards of Ayurveda. और कोशिश रहती है कि खास तौर पे वो लोग जो हमारे आयुर्वेद के सफ़र में हमारे साथी हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, उनके क्वेश्चंस को हम प्रायोरिटाइज करें। आज भी 2 हफ्ते के बाद आपके साथ मैं लाइव जुड़ रहा हूं। सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा कि कुछ प्रायोरिटीज़ ऐसी रही कि लास्ट वीक आई कुडंट जॉइन यू ओवर लाइव एंड देयर मस्ट हैव बीन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू हैव इन योर माइंड व्हिच आई मिस्ड। बट आज जब हम जुड़े हैं तो कुछ छोटी सी बातें ऑटिज्म को लेकर के, ऑटिज्म जिसके लिए कि आप में से बहुत से लोग हमारे पास इलाज करवा रहे हैं, या आप में से बहुत से लोग जो हमारे पास इलाज करवाने का सोच रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए, मेडिकल साइंस की जब हम बात करते हैं तो आज मेडिकल साइंस में कमर्शलाइजेशन बहुत बढ़ जाने के कारण कुछ फेक सेंटर्स, कुछ गलत कमिटमेंट्स कुछ सेंटर्स के तरफ से पेशेंट्स को कर दी जाती हैं, जिनमें हमारे भी कुछ डाटाबेस के ऊपर मेरे नेम को यूज करके आप लोगों को रीच आउट किया गया है। आप में से कुछ लोगों को प्लीज याद रखिए, हमारे जो हेल्पलाइन नंबर्स आपको दिए गए हैं, इन हेल्पलाइन नंबर्स के अलावा और फेस टू फेस या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या मेरे इन लाइव्स के अलावा कहीं पर भी किसी भी कीमत पर आप हरगिज इलाज मत शुरू करवा लीजिए सोच करके कि आपका केस जो है वो हम तक पहुंचा है। और इलाज, अगर हम ऑटिज्म की बात कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि जब भी कभी एनडी केयर पे मैं पेशेंट्स का, बच्चों का जब मैं इलाज करता हूं तो हर बच्चे को दवा नहीं दी जाती है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट ईच एंड एवरी चाइल्ड इज गिवन medications over here. There are children who will only take medications. There are children where we only give therapies, and there are children where we go for both therapies as well as medications. So ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि डायग्नोज आप ज़रूर करवाएं। हमारे डॉक्टर्स के साथ आपका कनेक्ट करना, हमारे साइकोलॉजिस्ट के साथ आपका कनेक्ट करना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेशंस पे हमने इसी कारण से एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है कि एक तो जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किसी के साथ कनेक्ट करते हैं, हमारे लिए भी एनालिसिस करना इट बिकम्स वेरी इजी। एट द सेम टाइम एज अ पेरेंट यू कैन इजीली फिगर आउट वेदर यू आर कनेक्टिंग टू अ सेंटर विच इज जेन्युइन और नॉट। ऑटिज्म की हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड ऑटिज्म डे जो है वो बहुत पास है। आपके क्वेश्चंस के लिए मैं अपना मोबाइल भी साथ में निकाल रहा हूं। वर्ल्ड ऑटिज्म डे बहुत पास है। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे अप्रोच कर रहा है और हमने कुछ खास, कुछ स्पेशल इवेंट्स रखे हैं इस दिन पर। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर्स के थ्रू हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। वर्ल्ड ऑटिज्म डे पे क्या खास है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, इस बारे में जानने के। सो एज आई जस्ट मेंशन, क्वेश्चंस हमारी हमेशा से ही प्रायोरिटी रहते हैं। सो सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस के बीच जब समय लग पाया तो डेफिनेटली कुछ बातें भी आपके साथ जरूर की जाएंगी। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आप ही के साथ रेगुलर इन टच रहने के लिए व्हाट्सएप चैनल हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जो हम आगे एक्टिवली नहीं चला रहे थे, अब एक्टिवली चलाया जा रहा है। उस व्हाट्सएप चैनल का लिंक अभी आप मेरे इस लाइव स्ट्रीम में ही क्वेश्चंस के अंदर ही देख पाएंगे। आप उस चैनल को ज्वाइन करके डायरेक्ट हमारी तरफ से जो अपडेट्स दिए जाते हैं
उन अपडेट्स के साथ जुड़े रह सकते हैं और उसके साथ साथ आप कुछ भी अब तक पहुंचाना चाहें वहां भी वो चैनल आपके लिए बहुत लाभदायक है। सो इस चैनल का लिंक टीप में चाहूंगा इमीडिएटली आप शेयर करें ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं उस चैनल को ज्वाइन कर सकें, उस चैनल का वो लाभ उठा सकें। रिताक्षी शर्मा जी, आपका पहला क्वेश्चन है। नित्य आपके कोऑर्डिनेटर हैं और नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए 6.5 मंथ से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं। बीच में रिलैप्स हुआ है और आप जानना चाहते हैं कि कब ये रिलैप्सेस बंद हो जाएंगे। तो रितिका जी, हमें याद रखना है कि जनरली जब हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आयुर्वेद का इस्तेमाल करते हैं, करीबन 1 साल से लेकर के 1.5 साल का समय लगता है रिलैप्सेस को खत्म होने में। हाँ, रिलैप्सेस की फ्रीक्वेंसी ग्रेजुअली डाउन आनी चाहिए। तो आप प्लीज हमें यह भी बताएं क्या सात्विक के केस में अब रिलैप्सेस की फ्रीक्वेंसी डाउन आई है? क्या पहले से कम रिलैप्सेस हो रहे हैं? और क्या अगर रिलैप्स हो रहा है तो सात्विक जल्दी से ठीक हो पा रहा है? रिलैप्स अगर होता भी है तो एक बार जब हमारा आयुर्वेद रेगुलर चल रहा है तो वहां हम ये देख पाते हैं कि रिलैप्स होने पर जल्द से जल्द जो है वो बाहर आ पाता है बच्चा उस पर्टिकुलर कंडीशन से। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डॉक्टर साहब, जो इज इन लो मूड करंटली, licking and spitting, what shall we do? Please guide. Ashima is the coordinator and we are talking about Harjot. Uh, the sessions are going on with Dr. Gurpriya, Ishan, and Ishan is trying to build a rapport with Harjot. And I would also like to know how frequently Ishan is connecting with Harjot in this regards. And Meenu is also going for the session. So since Harjot is currently in a low phase, so as we decided in the low phase, we are to go for the second kind of medicines which I guided previously. So switch over to the second category of medicines where you need to reduce the Sarpagandhavati, the DS, the other module which I guided. Immediately switch that module. Going further ahead, Samay Babuji, Tarun is your coordinator. Masan is not taking cucurbit oil. Can I continue only with Breno? Cognitive skills कैसे बढ़ाएं? Samay ji, I would like to update over here कि cucurbit oil is a very important part of our medication and cucurbit oil को आप नॉर्मल सब्जी के अंदर या किसी दूसरे सिरप के अंदर डाल के भी दे सकते हैं। सो कोशिश करें अगर वो कुकुरबिट ऑयल कैरी ऑन कर सके, वरना अगर आपको लगता है किसी भी कीमत पे कुकुरबिट ऑयल वो नहीं ले रहा है तो कुकुरबिट ऑयल का आपको शिरोपिचू स्टार्ट करना पड़ेगा और ब्रेनो आर की डोज उस केस में बढ़ानी पड़ेगी। ब्रेनो आर की हमने बात की है तो हम कुछ मेडिसिन की बात भी कर ही लेते हैं। जनरली जब हम मेडिसिन की बात करते हैं, बहुत सी ऐसी मेडिकेशंस हैं, दिखानी भी जरूरी है आपको, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मेरे ही नाम पे या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे आप लोगों के पास ऐसी चीजें पहुंचा दी जाती हैं क्वैक्स के थ्रू, जहां रेपुटेशन हमारी ताक पे लग जाती है लेकिन रियलिटी में आपका केस हमारे पास चल ही नहीं रहा होता। इसीलिए मेरी आपसे हमेशा विनती रहती है, हमेशा हमारे हेल्पलाइन नंबर्स को प्रेफर करें, हमेशा कोशिश करें लाइव ज्वाइन करने की, उन्हें मिस मत करें। व्हाट्सएप चैनल ऑफिशियल आपके लिए हमने ओपन किया है, उसके थ्रू आप संपर्क पे रहें। बट डायरेक्ट नंबर्स कोऑर्डिनेटर के आपको थोड़ा कन्वीनियंट जरूर लगेगा लेकिन वो अवॉइड करें, वहां से आपके पास मिस इंफॉर्मेशन भी आ सकती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्टे कनेक्टेड थ्रू द ऑफिशियल पैरामीटर्स। सो देयर आर सम ऑफ द थिंग्स लाइक babuna sachet is one of them. How is it going to open up, team? Can you help me out over there? Raghav, can you be over here? Yeah. Okay. So now we are going ahead with the babuna sachet. It was important to show some of the things. Now this is the babuna sachet which we use. As you all are aware that when we talk about autistic kid, so generally it is told that there are gut issues in a child who is suffering from autism. And for those gut issues, probiotics are guided. And there are a bit of constipation issues also. So one of those very important thing was the babuna sachet. Can we go back to the babuna? Let it be over here. Yes.
You look, yeah, this one, the one which we were just talking about. I'm again repeating it for you. Babuna drops for the digestive issues of your child. So if your child is facing digestive issues and you are taking treatment from us, but Babuna hasn't been started in your child, you can get back to your coordinator. You can ask for that. Now the next one which we are showing to you is the Breno A. Breno A comes in the form of syrup. It comes in the form of sachets, in the form of capsules. Notice in those phases where the child is sitting alone on one side, there Breno A becomes very important. Again, you can see the pics. If you see that the Breno A coming to is of different variety than what you can see over here in the pics, do confirm by clicking it up, sharing it on our WhatsApp number, and so that you can be very sure that yes, you are getting the authenticated products. Moving further ahead, the next one, the Brainoir WhatsApp, the Brainoir Plus. I'll pause the video for you so that you can have a look at this. These are the kind of packings which you get over here. This one is the mild variety which you can see over here. This one is the DS one, and then there are capsules. There is a SF variety, sugar-free one, for those where we feel that it is the one which is required in certain cases where the parents are not willing to go for sugar, although there is no such recommendation from my end that we are facing any kind of issues with sugar, but still there are parents who are not willing to give sugar to their children where they have observed that sugar is causing hyperactivity in their children. There we prefer the SF variety. So these were some of the things which I showed to you. It becomes very important that when you are taking treatment from us, follow the helplines, follow the WhatsApp which we are sharing. You are having our mobile app on the name of Wrist Pushed. You can download that app, you can go through that, but please do not coordinate with anyone on our name through non-official numbers of ours. What is very important for us to understand over here is that it's now 24 long years that I've been working with autistic kids and with other kids and in the field of Ayurveda. Just like any other organization, people come and people go. There are few who are there with me since now more than 24 years. There are others who come, who learn, they go. And there are few of them, some few of them who are not good enough and they are misguiding for the parents. As a result of that, ever since the beginning of when I started working with patients, I always guided the patients that don't go with what an individual is telling you. It's me. If you have consulted me on a video conferencing, or if we ever met on uh, in a OPD or a meet internationally, or one of my team, if you did it on VC, who guided you, analyzed the case, and promised you certain things. For us to keep those promises, for us to be able to be successful in what we guided you, it becomes very important that the promises are met from your end also. It means it becomes very important that if your psychologist is changed, you are supportive in that. If your doctor is changed, you are supportive in that. If your medicines are changed, you are supportive in that. But any such thing is to be changed through our official numbers only. It becomes very important because at the end of the day, if we are promising you something, by the grace of God the Almighty, in majority of the cases, we are able to meet what we committed to you. So moving further ahead with your questions, the next question is, and again, I would like to tell you over here in case of your son Pranav, as he's 8 years and 9 months in old. Sameji, we earlier also discussed, whenever possible for you, visit us when the age of the child is on a higher level. Coming to us, staying with us, and getting certain things done is a better option than being at your own home. One of the reason, we are NABH certified. Since we are NABH certified, majority of the treatments which you take from us as in-house treatments are covered under all major insurance companies. So if you're only taking an online treatment from us, it's not covered in your Mediclaim. But if you're coming to our Chandigarh center, staying with us for some days, along with the benefits which you get for your child, you also get your insurance coverage for your child. So that makes it more commercially viable for you
at the same time quicken up the treatment. So whenever possible for you, coming, staying and getting treatment done should always be prioritized. So moving further ahead, Mr. John Wick. Hi, Dr. Sharma. Our main problem hitting, spitting, less sitting. Please guide if any medicine need to be changed. Sahil is the age 13 years in age, and you also came to us for 30 days. Brinoa DS 5 ml at night, Enzyme, Babuna, Jatamansi. Uh, I see that the Brinoa regular is missing over here. I don't know whether it is being given, but your coordinator has shared with me over there we do not have Brinoa regular. So at Tanwar's age, at Sahil's age, 13 years in age, we do require Brenoir regular syrup also in the morning and afternoon, 10 ml. The DS can be 5 ml at night, but minimum 10 ml of concentrated Brenoir. That means if you are taking syrup, it has to be 20 ml. If you are taking the concentrated one, it has to be 10 ml. That is very must. Jadamansi oil, perfect. And I would also like over here a lavender oil head massage regularly. And Mukta Pishti is something which is not over here again. I don't know whether why it stopped if it was started earlier. Mukta Pishti is something which is very important. 250 milligrams of Mukta Pishti. And team, can you show Mukta Pishti over here? When I'm telling a medicine, if you're having the details of that, do show it for the parents to be able to see what exactly that medicine is about. You can see Mukta Pishti over here. It comes in this kind of packing. It is basically pearls blended in a rose water in a special way. So this is the Mukta Pishti. This needs to be added in 250 milligrams. Another thing which I can see over here is, and I really would like to know the details in this regards from you, Ashima, the number of sessions. I don't know whether someone is doing those sessions for him, but the sessions are very important. So please update me. Who is the psychologist we have allocated to you? What is the frequency of sessions you are taking? Because they are really very important. Specifically, when the age of a child goes higher, don't miss out on sessions. That is very important. The next question is Risha. Risha ji, hello sir, can my son take mango? He can take mangoes. There is no harm in that. And try that they are not off-season mangoes. When we talk about off-season mangoes, a lot of chemicals are used for those, for preserving those. If they are on-season mangoes, they are now at your place as a on-season fruit, there is no harm in taking those. And Avik is the patient, a child's name, and you started in July 2025, and we had a discussion on a video conferencing. Mukta Bishti, Babuna, Giloy, Pumpkin Seed, Jatamansi is going on, and Gurpriya and Nishtha are doing the sessions. 29 sessions have been taken, and I would also like to hear from you on how all is going on, because your coordinator hasn't shared with me that how all is going on. What are the aspects in which there are improvements? What are the aspects in which you want us to further work on? And thanks for joining the live. For all of you who join the live sessions, they are very important to be joined, because when we are discussing problems of one parent, you may get solution to your problems out of that. So out of your busy curriculums, never miss out on live sessions. And they also keep us connected. During your child's way out of autism, it is very important that we are all connected, we stay connected, we don't miss out on those. The next question, Christina Anthony. Good morning, doctor. We would like to plan our second visit for in-house as this program has benefited. That's really very great to know, and we would be welcoming you. In fact, it is really very worthwhile to be over there at our center. See, we may not be as comfortable as a hotel, but yes, we definitely are more comfortable than hospitals. And when you are over there, our teams give it our level best to ensure that yes, the time which you are giving us, we make that time really count up. Atharv is the next question about. Atharv is becoming very aggressive day by day. His focus little bit increased, but hyperactivity increased too. He still can't sit at one place. I cannot scold him in public, otherwise he will hit back. And
I don't know when the treatment started. I don't have the details in case of Atharv. But yes, I know that Brenoir, Cucurbita, Sarsaristum, Arsavadakkam, Muktapishti, they are all going on. For the time being, you can stop Manasmitravadakkam and you can stop Sarasutaristum. The rest of the medications you need to carry on. Brenoir Plus, it is 5 ml in the afternoon. It needs to be 10 ml in the afternoon. And yeah, rest is going on nicely. The only thing is, I don't know much about sessions over here. I know that yes, there have been 3 sessions, 2 with Payal, 1 with Nishta. But in how much time? When did we start in his case? And in proportion to that, how many sessions would have been done till now? At least in a child of 8 year, 10 month, it should be bi-weekly session. And by 13th or 14th session, we can expect that the focus will start improving. So don't worry. And those 2 changes which I just mentioned, those are the changes which need to be done. Rishiji, thanks a lot for updating. Yeah, Avik is improving and he definitely will keep on improving. So as I just mentioned to you, when we talk about autism, knowing about autism, autism की जानकारी, सही जानकारी ही अगर हम नहीं ले पाते और केवल आज गूगल के ये कह देने पे कि ऑटिज्म एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, आज हमारे आसपास के किसी साइकोलॉजिस्ट के कह देने पे कि ऑटिज्म एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, अगर सही जानकारी के अभाव में हम अपने बच्चे की उस उम्र को, जिस उम्र में वो ऑटिज्म को गुड बाय बोल सकता था, हमारे सहारे के साथ ऑटिज्म से धीरे धीरे करके बाहर आ सकता था, अगर उस एज को हम केवल इसलिए गवा देते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि ऑटिज्म एक जीवन भर रहने वाली कंडीशन है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे इन लाइव्स के थ्रू, मेरे पॉडकास्ट के थ्रू, जो इंटरव्यूज हैं उनके थ्रू मेरा अक्सर यह प्रयास रहता है कि ऑटिज्म के बारे में सही जानकारी मैं आप तक पहुंचा पाऊं, क्योंकि सही जानकारी, ऑटिज्म को सही तरीके से समझ पाना, वही शुरुआत है ऑटिज्म से आपके बच्चे के बाहर आने के इस सफर की। हमारी कोशिश रहती है कि इस सफर को अपने एक्सपीरियंस से हम आपके लिए फ्रूटफुल बना पाएं, सक्सेसफुल बना पाएं। आज बहुत से सेंटर्स हैं, बहुत से डॉक्टर्स हैं, बहुत सी दवाइयां हैं, लेकिन ऑटिज्म से बाहर आने का सफर, अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म से कोई बाहर ला सकता है तो वो हैं आप खुद। यही कारण है कि ऑटिज्म में आपके बच्चे के ऑटिज्म से बाहर निकलने के इस सफर में हमारा प्रयास रहता है हर कदम पर हम आपके साथ चलें, सही गाइडलाइंस दें और किसी भी स्टेज पर दवा चाहिए तो दवा दें, दवा नहीं चाहिए तो दवा ना दें। सो मेरी आपसे विनती है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यूं ही अपने बच्चों पे ट्रायल्स मत करवाएं, केवल अपनी कन्वीनियंस देख करके कि हमारे आसपास एक छोटा सा सेंटर है या एक बड़ा सेंटर है, वहां आपकी कन्वीनियंस है, आप अपने बच्चे को छोड़ कर आ सकते हैं। एंड इफ यू आर हैविंग योर प्लान्स गोइंग ऑन विद NHS और द लोकल हेल्थ अथॉरिटीज ऑफ योर कंट्री, it's easier for you to be going with your child over there. But it's not convenience which should matter at this hour. What should matter is the outcome. And if you stay with us, if you follow all that we are guiding, definitely autism becomes a temporary phase in the life of your child. So इसी विनती के साथ कि ऑटिज्म के इस सफर पर हमारा साथ दें, बातों को माने। जहां आपको लगता है कोई ऑटिज्म में इलाज करवाने में भटक गया है, वो ये मान गया है कि बच्चा ऑटिज्म से नहीं निकल सकता और कहीं ना कहीं पे अपने आसपास ही साइकोथेरेपी सेंटर में सिवियरली ऑटिस्टिक बच्चों में उस बच्चे को समय आप बर्बाद करते देखें, तो एक बार सही मार्गदर्शन जरूर करें, क्योंकि सही मार्गदर्शन के साथ, सही सहारे के साथ, आयुर्वेद और साइकोथेरेपी को मिला करके सही तरीके से चलने के साथ
बहुत से बच्चे ऑटिज्म से पूरी तरह बाहर आ सकते हैं। मेरी आपसे विनती है, हमारे इन वीडियोस को आपके लाइक्स बहुत मायने रखते हैं। आप प्लीज हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपके शेयर्स दे रियली मैटर अ लॉट टू अस। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस इन टुडेज लाइव। For all of you where I couldn't take your questions, my sincere apologies. You can paste your question on the WhatsApp number which is there on your screen. We definitely will make sure that our team gets back to you and replies your answers. For all of you who missed joining today's live session, once you are going through the video, please do remember it's important for us to connect and important for us to connect regularly to ensure that your little one makes it out of autism. And if you are taking any other Ayurvedic treatment from our organization, staying in connection is really very important. इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, रिष्ट पुष्ट रहें, मैं डॉक्टर नवदीप शर्मा अब आपसे आज्ञा चाहूंगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। According to Ayurveda, our Panchabhautik body is an amalgam of space, air, fire, water, and earth. Ayurvedic treatment rests on three powerful pillars: Daiva Vyapashraya, Yukti Vyapashraya, and Sattva Vajaya. I try to combine all three of these approaches for the treatment of children suffering from autism. Sattva Vajaya Chikitsa is a form of treatment that includes modern day psychotherapy within it. Being a D.Litt scholar with PhD in role of Ayurvedic herbs in psychological disorders, as well as a dedicated researcher, it has been comparatively easier for me to apply Ayurvedic Sattva Vajaya Chikitsa in integration with Yukti Vyapashraya Chikitsa with greater precision and effectiveness. This combined approach has been consistently used by us in the management of children suffering from autism. In addition, selected aspects of Deva Vyapashraya Chikitsa have also been incorporated wherever appropriate. I would now like to present one case study to begin with. This is the case study of Parth, a 3-year-old child diagnosed with autism. At a very young age, Parth showed multiple developmental challenges. Chief complaints: speech delay, hyperactivity, irritative behavior, less interaction, poor understanding. Parth's detailed medical history was documented and evaluated before initiating treatment. In July 2023, Parth's parents consulted Dr. Navdeep Sharma and felt confident about the scope of treatment. Following the comprehensive assessment, Parth was recommended the medicine's prescription Braino R dose, 10 ml in afternoon, 20 ml at night. Braino R contains these Ayurvedic herbs: Mandukparni, Kushmand, Ashwagandha, Amlaki, Jatamansi, Sarpagandha, and Ustupurus. Braino A dose, 30 ml in the morning. Braino A contains these Ayurvedic herbs: Shankpushpi, Brahmi, Shatavari, Bringraj, Shunti, and Vacha. Pumpkin seeds oil dose, 8 drops in the morning, 8 drops in the evening. Contains Ayurvedic herb ingredient pumpkin seeds. Mukta Pishti dose, 125 milligrams in the morning, empty stomach. Contains marine pearls. At the initial assessments, Parth's hyperactivity was 3 out of 5. There was reduction in hyperactivity before second consultation with rating at 2 out of 5. Color karo, very good Parth, color karo. नो इस हैंड से करते हैं, इस हैंड से, राइट हैंड, वेरी गुड। चलो कलर करो। At the start of treatment, Parth's speech was rated 1 out of 5. There was improvement before the second consultation, with the rating rising to 2 out of 5. बस हो गया अबे। Initially, command following was deficient with a rating of 1 out of 5. Prior to the second consultation, improvement was noted with a rating of 4 out of 5. Very good, cow. Very good. Initially, eye contact was rated 3 out of 5. Before the second consultation, his eye contact improved to a rating of 5 out of 5. उसका वीडियो बनाओ तो वो लड़का और भड़कता है एकदम से। पार्थ, खाना खा रहे हो? खाना खा रहे हो? हाँ? पार्थ, आपको क्या खाना है? क्या खाना है? At the beginning of treatment, Parth exhibited verbal stimming, visual sensory concerns, and hand flapping, with a rating of 4 out of 5. Prior to the second consultation, there was a reduction in his sensory concerns, with the rating dropping to 2 out of 5. Before second consultation, A-through examination was done where we evaluated the progress. Following is the medical comparative history of Parth. After 6 months, added Sarswata Rishtam with gold, 5 milliliters morning after food. All previous medicines continued in the same doses. From July to January, a total of 20 ABA sessions were completed with psychologist Mr. Rahul.
Before treatment, Parth often showed irritative behavior and did not respond clearly to instructions. करो और बाहर बिलो करो, बाहर करो, बाहर करो, ऐसे करो, ऐसे, हाँ बाहर, हाँ। चलो आ जाएगा वो। Within 9 months of undergoing treatment from Dr. Navdeep Sharma, Parth showed significant improvement. वेरी गुड, इसके अंदर रख दो। वेरी गुड, पापा का हैंड, दीदी का हैंड करो। वेरी गुड पापा, चलो। वेरी गुड, खाओ। वेरी गुड, बहुत हेलो पेरेंट्स, पार्थ हेलो करो, हेलो करो। ये पार्थ है मेरा बेटा, 4 साल का होने वाला है। लास्ट ईयर जुलाई में हम डॉक्टर नवदीप शर्मा सर के यहाँ पहुँचे थे। हमें एक सर ने मेरे बताया था सर के बारे में। हमने सोचा भी नहीं था कि आज 9 महीने में पार्थ मम्मा पापा हमसे बोलेगा इतनी जल्दी। हम तो मतलब बड़ा एक माँ पेरेंट्स के लिए एक रहता है कि कब हम मम्मा पापा सुनेंगे पार्थ के मुँह से। आज पार्थ मम्मा पापा और विद सेंस सब कुछ बोलता है। भगवान की कृपा से और सर की मेडिसिन और सर के गाइडेंस से आज 9 महीने में पार्थ एक नियर टू नॉर्मल लाइफ जी रहा है। और स्कूल में भी पार्थ प्ले ग्रुप में था। अभी जस्ट 15 दिन पहले स्कूल में मैम ने बोला कि पार्थ को हम नर्सरी में भेजेंगे। और जो सर ने जो लाइफ में हमारी खुशियाँ दी हैं, बहुत एक पेरेंट्स के लिए इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि उसका बच्चा इतनी जल्दी और इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट हो जाए, एक पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हमारी लाइफ में इतनी